हैदरवली की लीडरशिप में बीएस इंटरनेशनल स्कूल का एक बड़ा कदम, तारीखी कदम। यस यस यस, बीएस इंटरनेशनल स्कूल्स बिग स्टेप, हिस्टोरिक स्टेप। बीएस इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स बनेंगे पायलट्स। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में मौजूद बीएस इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स अब बनेंगे पायलट्स, फ्यूचर के पायलट्स। स्टूडेंट्स को फ्यूचर के पायलट्स बनाने के लिए बीएस इंटरनेशनल स्कूल ने एविएशन एजुकेशन की एक बड़ी इंस्टीट्यूट आईएफए से मुआहिदा किया है। जी हाँ, स्टूडेंट्स को फ्यूचर के पायलट्स बनाने के लिए बीएस इंटरनेशनल स्कूल ने एविएशन एजुकेशन की एक बड़ी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईएफए से मुआहिदा किया है। 21 दिसंबर 2024 बरोज हफ्ता बीएस इंटरनेशनल स्कूल के एनुअल डे के मौके पर आईएफए से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन किया गया। इस यादगार मौके पर फर्स्ट इंडियन सिविलियन एस्ट्रोनॉट कमर्शियल पायलट कैप्टन गोपीचंद थोटकोरा, जो आईएएफ के चेयरमैन भी हैं, मौजूद थे। कैप्टन गोपीचंद थोटकोरा के अलावा आईएएफ के डायरेक्टर कैप्टन रविंद्र शेरावत भी मौजूद थे। बीएस इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन डी हैदरवली, वाइस चेयरमैन शाहिद वली, सीईओ केएस बिरादार की कोशिश से पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से एमओयू साइन किया गया। बीएस इंटरनेशनल स्कूल के इस खूबसूरत एनुअल डे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एडिशनल कमिश्नर शिवानंद कलकेरी, आंध्र प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार शाजिल अहमद, मोटिवेशनल स्पीकर मोहम्मद इरफान गेस्ट के तौर पर मौजूद थे। और इन तमाम मेहमानों ने बीएस इंटरनेशनल स्कूल की तर्ज तालीम एजुकेशन को मुख्तलिफ अंदाज में फराहम करने की कोशिशों की सताइश की। चेयरमैन डी हैदरवली ने कहा कि बीएस इंटरनेशनल स्कूल का मकसद एक्सपर्ट्स और लीडर्स को तैयार करना है। यहाँ से फारिग होने वाले तमाम स्टूडेंट्स टॉप पोजीशन पर रहें, गवर्नमेंट बिजनेस इंडस्ट्री को लीड करने वाले बने, जॉब सीकर्स नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर्स बने, एंटरप्रेन्योर्स बने। इस मकसद के तहत बीएस इंटरनेशनल स्कूल कायम की गई है और यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, दी बेस्ट फैकल्टी मौजूद हैं। दोस्तों, बीएस इंटरनेशनल स्कूल ने अपना सालाना प्रोग्राम एनुअल डे फंटासिया 2024 का शानदार पैमाने पर इनाकाद किया। विस्तार पवित्रा कन्वेंशन हॉल में ये एनुअल डे प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। इस मौके पर बीएस इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स ने अपने टैलेंट का, अपनी सलाहियतों, काबिलियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। Today, you all see the pilot training program institution who had a MOU. This is the first school in India, I can say proudly. This is the first school. Nobody is having, because our Gopichand also very close friend of us, and he assured that who are going to crack the examination, they are going to give the 50% of the discount, and for the economically weaker people, they are going to sponsor fully also, because this is a fantastic opportunity for the parents to make their dream true. By 18 years, you can make your child be a pilot. They can make money also, because they can settle. Because you all know that BS International School, it is not only school, it is going to create, inculcate all these sports and science, and moreover, our ambition is to make the children at the age of 18, they have to make money. They should not feel the unemployed. The unemployment, today you know that, today you know very well, the unemployment problem in India, it is too much, because no other countries is having, it is India is having a lot of unemployment problem. But
But unfortunately, our education system is wrong. We are using the 18th century education, macular education system. Then there is no meaning for this for the generation of 21st century. The education should be modernized according to the child psychology and the child philosophy. You all know that, you are all the parents. You know that your ages, your mind, your circumstances and today's children, and the difference is a lot. Because previously I used to thought it is only for a decade the changes might happen. But nowadays, every 3 to 5 years, the child psychology is changing. Their brightness, there are a lot of tools are available. Because today's 5-year child, I am seeing my granddaughter, she is a 4-year, she is what she had a knowledge today. I was not having the knowledge when I was 12-13 years old. Because this is a different, and now we are thinking that we have to pursue the higher education. But in the meantime, PS slogan is while you are learning, you should earn. Earning is the most important. Why I am telling you? I started my earning when I was a student. Because I started my career at the age of 19 years. I don't want to depend on my parents. I want to earn myself. I want to pursue my higher studies. I studied up to law degree. I practiced as a lawyer and an entrepreneur, and then educationist and health and construction in several industries. Because my ambition is to build my BS student to become the entrepreneur. Today, the message today is to give students the opportunity to be free and do what they want. BS International is definitely shaping the way of the future. BS International is not your everyday mundane school. It's definitely something unique, and I think the parents see it. They have just collaborated with IFA, which is one of the largest flight training institutions in the country. So to open the gateway for not, a collaboration with IFA is not just piloting. It's engineering, it's air traffic control, it's aviation management, it's airport operations. There are so many opportunities for them in the aviation field. It's not just about becoming a pilot. It's not a male-centric job. It is for females and for males. 50% of our country is female pilots today. So using that, we have to push the message forward to be able to let the kid be free. And nobody better than our Vice Chairman, our CEO, Birhadar sir, to take this vision forward under the visionary leadership of Dr. Wali. So thank you so much. Education, you are in only conventional education. So I would definitely say that conventional education is important. I don't know if it's the cornerstone for you to be brought up, but it is a choice, and the choice is to be left to the parent, to the individual. Definitely primary education is very important. There is a lot of options for homeschooling. It doesn't have to be in an establishment. You don't have to go to the ivory tower to do schooling in very fancy, big names. Education here is also the same education there. Sometimes it is better in places that is not glamored and plastered with the who is who. Because I see it here, I see it live, the sports they're offering, the extracurricular activities they offer, the Montessori they've opened, there is nothing like it that I've seen. I've been to hundreds of schools. So it's definitely something to let the student make his or her own path. Don't make the path for them, and let the faculty here guide the student in making a path for them. That's what I would say. Thank you so much. It was very charming collaboration, and I already thank our chairman and CEO Sri Hyderwali sir and the KSP Birhadar sir. So this collaboration is going to be amazing, because I think it is the first collaboration we did, and so far we have trained around 10,000 pilots. Right now, if you see, the number of pilots is around 30,000, so approximately 1/3 of the pilots coming out from our institute. So if it comes to have the eligibility criteria, I explained that the student needs to be at least 16 years of age to start his training. The time he gets the commercial pilot license, he needs to be 18 years age, and in class 12th he needs to have physics, maths and English. These three are the main subjects, and then of course he needs to be medically fit,
Right, for that, the medical exam is conducted by the Air Force Medical Centers. So that's it we need, and nowadays we have two types of programs. One is known as the basic program, which is conventional one, where the candidate has no job guarantee, and the other one is the cadet program. In the cadet program, they have the job guarantee from the day one. So we encourage the students to join the cadet programs of the various airlines, so that when the parents spend a lot of money, their job can be assured. Right, and from our foundation, we have announced that we will conduct the exam to the meritorious students. We are going to give the scholarship. We will sponsor the training. ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಈ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಶಾಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಶಾಲೆಯ ಆವರಣವನ್ನು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಕುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ದಟ್ ದಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯತೆ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪರಂಪರೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರತೀಕ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಈ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್, ಬಟ್ ನಾವು ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ 2 ಎಕರೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಇಂಡೋರ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಡೋರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ. ನೀವು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೂ ಇದೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಕೇವಲ ನಾವು ಬರೀ ಪುಸ್ತಕದ ಹುಳುಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. आप कैसे देखते हैं? काफी सारे स्कूल्स और यूनिवर्सिटी तक भी आप तजुर्बा रखते हैं, तो BS इंटरनेशनल स्कूल को किस मुकाम पर आप देखते हैं? Yeah, Alhamdulillah, I am associated with higher education only, and I have visited almost, I think, 300-400 educational institutions across the country, including serving as one of the youngest registrars of one of the universities in Andhra Pradesh. BS International, why I was fascinated, मेरा यहाँ आने का मन इसलिए किया था कि I was just searching on internet and I read parents के reviews, और मैं जाके देखा भाई इसमें negative कितने हैं. The most negative of the parent also wrote something positive. Right, that was something I said यार बहुत अच्छा है, and moreover my good friend Irfan told कि भाई नहीं आपको आना चाहिए. तो I came over here and I saw the infrastructure. पहली नजर इंफ्रा पे पड़ती है, जो दिखता है वही बिकता है, बट उनका मकसद बेचना ही है नहीं. When I met the chairman, very simple man, so he said infra is not our goal, development of character of people is our goal. He said we are teaching children the scientific method of drinking water, right? Can you imagine कोई स्कूल हमारे टाइम में, या फिर आई एम श्योर prior to my ancestors as well, कोई स्कूल ये नहीं सिखाता था हमें कि पानी कैसे पिएं, right? Drinking water, right? There is culture in that, there is scientific role which goes beyond it. Also they have set up a beautiful Montessori. They have, Captain Gopinath was the first astronaut, so who was there with me, he was telling me you should visit every room and watch कि क्या इन्होंने build किया हुआ है. They have set up archery classes, shooting classes, and I come over here and I see most of the students have actually become champions at national level, state level, and कोई बच्चा shooting में जीत रहा है, कोई बच्चा multiple gold medalists in skating. तो ये what I feel is these kind of institutions are hidden gems, and I generally only write about higher education institution in my small publication, or you can call it as blog, called Registrar Reviews, right? But first time after seeing all this, I felt like I should write something about how a model school should be, where the owner of the institution, though I do not know him well, right? I had a very short interaction with him, but the vision is very clear, right? The purpose is very clear as to what they are trying to build, and it reminds us now. So what he is telling, I want to set up a startup hub for school students. It is so radical of a thought. आप सोच के देखिए, it's how radical.
आज हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इज टेलिंग अस वी नीड टू हैव अप्रेंटिसशिप लिंक्ड डिग्रीज, वी नीड टू हैव what do you say, entrepreneurship and innovation cells in the organization and institutions. Over here there is a school who is saying मैं सिखाऊंगा ना मेरे बच्चों को how do we set up what do you say, startups. That's very radical. I think it sums up, I mean, I would like to sum up with Allama Iqbal, right? You would have heard about him. So one of the greatest thinkers of our time, I always reference him. So he used to tell, I mean, this is what the chairman has been telling the children, right? कि Allama Iqbal used to use how should a youth think. The youth should think, he had a thought for the youth that was like, नहीं तेरा नशे मन खसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है परवाज कर पहाड़ों की चट्टानों में. It's like you are not meant to be a pigeon who sits on the domes of the palace. You are meant to be a falcon which breaks the barriers of the mountains and the peaks, right? I think that's what they're grooming children, and it's fascinating. मैं इतना इम्प्रेस कोई स्कूल से नहीं हुआ जितना यहाँ से मुतासिर होके जा रहा हूँ. I have been to the best of the schools, right? I would love to actually, come back and also explore how my children can come and join. And last but not the least, एक और चीज बहुत अच्छी लगी थी, though I'm taking a little extra time from you. What I really liked was their own children, the owner's own children, they are studying over here as students. जो बच्ची मार्च कर रही थी, the chairman was telling, वो तो मेरी granddaughter है. And it's a great sign. See, many of the educationists in the country, biggest problem जो है, अपने बच्चों को कहीं और पढ़ाते हैं, अपने इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ाते. जो खुद के इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहा है उसकी नीयत पे ना मतलब कभी शक नहीं हो सकता कि they are actually trying to build something for their own blood and for their own flesh. So अगर वो अपने बच्चों के लिए जो कर रहे हैं, they are wishing the same for the other children. Nothing greater than that. Nothing greater than that. मैं एक्स आर्मी हूँ और मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ. मोटिवेशन क्लासेस पिछले 8 साल से पूरा इंडिया में मैं हजारों प्रोग्राम, मोर देन 5000 प्लस प्रोग्राम्स मैं कर चुका हूँ हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु लैंग्वेज में. मैं ब्रेनी स्टार इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन साहब से एक 6 मंथ्स पहले उनसे मेरा मुलाकात हुई. उनके साथ काफी सारे डिस्कशंस हुए. ब्रेनी स्टार इंटरनेशनल स्कूल जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी में है, इस स्कूल के बारे में सर मेरे साथ बहुत सारे चीजें डिस्कशन किए. हमारे स्कूल में एक मोटिवेशन क्लास आप आके आप बोलना चाहिए, स्पीच आप आना है, ऐसा इन्विटेशन दिए थे. तो मैं आया था, आके मैं इनके स्टूडेंट्स के साथ 8th 9th 10th +1 +2 स्टूडेंट्स के साथ मैं इंटरेक्शन हुआ और उनको 1.5 आवर तक बहुत सारे मोटिवेशन थिंग्स जो करियर के बारे में, गोल सेटिंग के बारे में, हैबिट्स के बारे में मैं स्पीच दे चुका हूँ. और उस समय पे मैं पूरा कैंपस विजिट कर चुका हूँ. यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स के साथ बातचीत किया, यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ बातचीत किया. और चेयरमैन साहब का सोच ये है कि उनको ये स्कूल से जो भी बाहर निकल के जाएंगे, ये लोग कोई एम्प्लॉयज नहीं बनना चाहिए, एम्प्लॉयर बनना चाहिए, ताकि मतलब ये लोग सीईओ बने और कंपनीज खुद खड़ा करके बहुत सारे हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट खुद दे. लीडर्स को क्रिएट करना चाहते हैं. आज आप ये ब्रेनी स्टार इंटरनेशनल स्कूल का एनुअल डे प्रोग्राम के अंदर अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे स्टेज के ऊपर MOU भी हो चुका है कि ये स्कूल के अंदर जो पढ़ रहे हैं बच्चे छोटे उम्र में, मतलब 20 साल के अंदर अंदर ही ये लोगों को पायलट बनाना है, एंटरप्रेन्योर्स बनाने का एक सोच लेके, बहुत बड़ा विजन लेके, और इनको लीडरशिप क्वालिटीज के साथ, मोटिवेशन के साथ आगे लेके जाना चाह रहे हैं. ये चेयरमैन साहब का सोच है. ऐसे स्कूल में मुझे एनुअल डे के लिए मुझे इन्वाइट किए. मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ चेयरमैन साहब को. शुक्रिया.